Hello students, this is the seventh video of our JavaScripting series. In this video, we are going to learn about the JavaScripting switch statement. So सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि switch statement है क्या. So here the problem is, I would like to discuss one problem. मुझे एक छोटा सा एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ मल्टीपल if else कंडीशंस में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे थे, right? But if I have to find any alternative for if else statement, अगर मुझे कोई एक अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है if else स्टेटमेंट के लिए, then the switch statement is the best choice. मतलब हम लोग if else स्टेटमेंट को switch स्टेटमेंट से बदल सकते हैं. सो लेट अस गो फॉर द सिंटैक्स वेरी फर्स्ट. हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे. हम सबसे पहले स्विच लूप के बारे में सीखेंगे कि स्विच लूप को कॉल कैसे किया जाता है एक फंक्शन में. और दूसरी चीज़ हम लोग ये सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का स्विच लूप कैसे काम करता है. सो वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू गिव यू द सिंटैक्स. स्विच केस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को कीवर्ड लिखना पड़ेगा स्विच. Then inside the simple bracket we will write the expression and it will have the multiple cases. So, means you can write the multiple cases within a one switch statement. And if let's say that suppose we are having the three switch cases, then we can type it as an the so at least three switches we will just type over there, and one switch we will keep it is under default. तो एक केस हम लोग डिफॉल्ट रखेंगे. जितनी स्विच नंबर ऑफ स्विचेस हम लोगों को लिखने हैं उतने नंबर ऑफ स्विचेस हम लोग उसमें पैरेलल लिखेंगे. ओके, सो लेट अस मूव टू अवर स्क्रीन कोड. मैं इसका एक स्विच केस का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूँगा कि स्विच को इस काम कैसे करता है. सो very first, before the demonstration I would like to give you the flow chart that how it is going to be executed. तो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन रहेगा. अगर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक की जाएगी कि वो किस केस के साथ मैच होता है. फॉर एग्जांपल, suppose it is matching to the case number 1, then code block number 1 will be executed. If it is matching to the case number 2, then the particular code block for the second code it will be executed, and like this it will be carry on for the all the cases. Okay, and by default the last switch case it will be, we will write it for the default one. हम लोग उसको default के लिए लिखेंगे. So this is a syntax for writing the switch case statement. मतलब हम लोग एक switch case select किया है, इसमें एक एक्सप्रेशन लिखेंगे. एक्सप्रेशन की जो वैल्यू रहेगी वो या तो इंटीजर रहेगी या फिर कैरेक्टर टाइप की एक वैल्यू रहेगी जो एक्सप्रेशन रहेगा. और मल्टीपल केसेस हम लोग स्टेटमेंट्स में लिखेंगे. सो लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस. ओके, सपोज आई वांट टू execute like this program. Okay, so very first we have moved to the our program screen. मैं सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके रखा है जो मैं रन करना चाहूँगा. एंड दिस इज नथिंग बट द स्टैटिक वेब पेज इट इज़ बीन क्रिएटेड. तो मैं यहाँ पे जो स्टैटिक वेब पेज क्रिएट किया गया है उस स्टैटिक वेब पेज के लिए हम लोग प्रिपेयर हो गए हैं. ओके, सो इन अ स्क्रिप्ट टैग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं एक वेरिएबल लेना चाहूँगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एट द स्टार्ट हम लोगों ने स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल लिया है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लेना चाहूँगा कि लेट मी टेक द वेरिएबल विद द लेट कीवर्ड, लेट ग्रेड इज इक्वल टू और एक इसकी वैल्यू हम लोग एक कैरेक्टर देंगे. ओके, सो आई वुड लाइक टू गिव द वन कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ए. Okay, so now I'm just going to change it for the remaining cases. Okay, so मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा स्विच के अंदर हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखेंगे कि अगर ग्रेड की वैल्यू इक्वल टू it is a comparison. So equal to means the one comparison we are going to take place. Okay, and it is equal to
the whatever the case it is going to be occur. Okay, so सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं कि स्विच इंस्टेड ऑफ दिस कंडीशन आई हैव कमिटेड वन मिस्टेक, इसके जगह पे हम लोग एक ग्रेड को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हम लोग पैरेलली एक केस लिखेंगे, राइट? नाउ the here I am just going to write the case numbers. Okay, so मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक केस लिखता हूँ, केस 1 फॉर एग्जांपल. ओके, तो केस 1 के लिए हम लोग लेट अस चेक द कोड दैट हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन एज आई हैव रिटन द लेटर ए बी सी. ओके, so like this in the same fashion we are going to continue. Instead of 1 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ए केस लिखेंगे. ठीक है, अभी इस केस में हम लोग एक स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे कि अगर मुझे जो स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टेटमेंट लिखना है. फॉर एग्जांपल आई हैव टू राइट डाउन द वन स्टेटमेंट एज एन रिजल्ट इज इक्वल टू ए ग्रेड. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक स्ट्रिंग रहेगा ए grade. Fine. Now we will carry out it for the break. Okay, हर एक केस के बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगा, ब्रेक स्टेटमेंट, जो उस केस को ब्रेक करेगा. ओके, एंड दिस वी विल कंटिन्यू फॉर द नंबर ऑफ द केसेस. आप लोगों को जितनी नंबर ऑफ केसेस वहाँ पे लिखनी है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर केस ए लिखना है, केस बी के लिए मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा. लेट मी जस्ट टेक इट फॉर द केस बी और केस सी. फाइन, सो इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, सो इट शुड बी वेरी लुक द गुड. ठीक है, सो केस बी हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस कर लिए. मैं मेरे कोड में थोड़े से चेंजेस करता हूँ, बी एंड केस सी, राइट? तो यहाँ पे हम लोग सी लिखेंगे एंड there will be one default case we will run. For example, I am just running one default case. जो default case में हम लोग लिखेंगे कि result is equal to invalid grade. Fine. So I have written this statement. Okay, let us go back to our theoretical part. Okay, तो मैंने ये इतना सिंटैक्स लिख लिया है कि अगर मैं 3 केसेस के लिए लिखता हूँ और रिजल्ट इज इक्वल टू इनवैलिड ग्रेड. ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस स्विच केस के बाहर मैं एक आईडी यूज करूँगा. ओके, सो आई विल जस्ट यूज ओवर हियर द आईडी. ओके, दैट सपोज आई वांट टू राइट डाउन दिस रिजल्ट. ओके, मुझे ये रिजल्ट यहाँ पे लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. हम फ्रिक्वेंटली ये यूज़ कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने ये यूज़ किया था. ओके, तो मेरी आईडी है यहाँ पे रेस. ओके, तो मैं रेस यूज़ करूँगा, डॉट इनर HTML. सो इनर HTML एंड it will give me the result. तो मैं रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा. फाइन, आई थिंक आई हैव नॉट डिक्लेयर्ड द वेरिएबल विद द रिजल्ट. ओके, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि मुझे ये डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू थ्रो द एरर. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट रिजल्ट और एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया. ओके, एज आई एम गोइंग टू यूज इट. ओके, सो दिस इज द केस. फाइन, चलो इसको रन करते हैं. हम लोग सेव कर लिया मैंने प्रोग्राम को. नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम. ओके, इसको मैं चेक करता हूँ. तो अभी मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू लिखी है ए. ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर द ए ग्रेड इट इज बीन रिटन. ओके, मैं इसको थोड़ा सा एक स्क्रीन एडजस्टमेंट कर लेता हूँ. ओके, so if my result it means I have written it is as in the A, so the result appearing it is nothing but the A grade. अगर मैं यहाँ पे B कर देता हूँ, okay, instead of A, if I have written the B, okay, then the if I will just refresh this, now you can observe it is the changes, it is been B. Okay,
So if I will make it as an C, then let me just check this is C grade. So parallelly you can check it for the anyone. Okay. अभी यहाँ पे हम लोगों ने 3 केसेस चेक कर ली. Okay, instead of this one, suppose I will take any other number. For example, X I am taking. Okay, so this will generate the result for the default case, and it is giving the result as an invalid grade. Okay, so actually में हो क्या रहा है, switch statement में हो क्या रहा है कि switch statement this grade it is been checking from the switch case statement. ये क्या कर रहा है कि ये इस वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने डिक्लेयर की है, उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज की है, फाइन, इट इज चेकिंग दैट वेदर दिस वैल्यू इट इज बीन करेक्ट और नॉट. ओके, if it is found to be the correct, then the particular cases it is going to be run. Okay, so you can like this you can run the particular. अगर मेरा आउट इनपुट A है तो हम लोग A ग्रेड में रहेंगे, B है तो B ग्रेड में रहेंगे, like that. For the all the cases it will run. Okay, and if it is not correct for all the cases, अगर ये कोड एक particular सारे केसेस के लिए अगर करेक्ट नहीं है, then the default case it is going to be run. So in this fashion the switch case statement it is going to be execute. I hope this is clear to all of you. Okay, so in this way the switch case statement it is going to be execute. Now what we are going to understand कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे. हम लोग एक चीज़ यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट करके रखा, इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी राइट दिस ब्रेक स्टेटमेंट, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, देन व्हाट इज गोइंग टू बी ऑफर. ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया. ओके, सो आई एम एट द इनिशियल स्टेज, राइट. सो लेट मी जस्ट चेक ओवर हियर. ओके, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ. ओके, सो you can observe over here that by default it is of the grade it is of the A. Okay, so it should give the result as in the A only, but as it is not having, we are not having any break statement inside that, so still it is showing me the invalid grade. Okay, so we can check it for the multiple cases also. अगर हम लोग यहाँ पे A की जगह पे यहाँ पे B के लिए चेक करते हैं. Okay, let us check it for the B. Okay, मैं इसको रन करता हूँ. Okay, so still it is been giving the invalid grade. Okay, so this is not going to be work. Okay, it will work only with the case of the break statement. ये break statement के साथ क्या करेगा, work करेगा. Okay, so it means it is compulsory that whenever you are writing in JavaScripting, you are writing any cases, then you should write at the end of every case, you should compulsory write the break statement. Okay, it's a good practice to write the break statement. Fine. So this works like a C language only. ये work करता है एक C language की तरह ही वर्क करेगा. अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा, या फिर ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा. ओके, सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर or the short demonstration we are having with the script statement. At the end of the chapter, this JavaScript switch statement, one assignment it is been given, which is related with the writing the program to writing the selected grade by the user. अगर मैं so I hope you will do this assignment. मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये असाइनमेंट के थ्रू आप गो थ्रू होंगे. Fine, and you will practice this kind of the problem. What kind of you will just test this output as well. Okay, आप इसको इस आउटपुट को टेस्ट भी करेंगे. There are the two questions have been given about the second question, which is about the print all the grades like. Okay, तो मुझे अगर सारे ग्रेड्स अगर प्रिंट करने हैं तो मैं क्या करूँगा. So that you can also check for the all the outputs as well. Fine. So that can be the case related with your output. Fine. एक छोटा सा माइनर सा चेंज मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल है कि आई एम जस्ट नॉट राइटिंग द ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ. ओके,
and instead of this document get element by id or res, I'm going to write over here the method called as document dot write. मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा document dot write. Inside this write method I'm going to write the result. यहाँ पे लिखना चाहूँगा result. Okay, and I am interested in only in result. So now this time we are not using the id. Okay, let's see that what will be the output. Okay, हम लोग इसको जज करेंगे कि output क्या रहेगा. So I will just you expected it as an the default. In last case it was the default. Okay, but let us check it now. Okay, so again it is the invalid grade. Okay, so you can judge it for the any of the output, that if I'm not writing whether writing the document dot write or whether I am writing the get element by id. Okay, the result is going to be this is just only the output method we are having. Okay, so it is not going to be differ. ये यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं करने वाला, राइट. सो आई होप यू विल डू दिस असाइनमेंट एज वेल. आप ये भी असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, फाइन. And we will meet with the some new topic in the next video. Till then, stay tuned and stay studied. Thank you. Thanks for the watch.